LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षित कल के साथ साथ NPS आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ AK भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अब हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Ambrish and AK sir. Welcome to the program. A quick look at the headlines. Key domestic indices continue their bull run. Sensex closes at 71,484. Nifty settles at 21,457. Inland fish production registers more than 131 lakh tons in 2022-23 and 1,22,865 crore rupees put in place for railways upgradation. देश के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी का दौर आज भी जारी रहा। सेंसेक्स 71,484 अंक और निफ्टी 21,457 अंकों पर बंद हुआ। देश में मछली का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 131 लाख टन से अधिक हुआ और रेलवे के अपग्रेडेशन के लिए 1,22,865 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। और अब आज की पहली खबर। देश के प्रमुख शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 970 अंक यानी 1.37% की तेजी के साथ 71,484 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 274 अंक यानी 1.29% बढ़कर 21,457 अंकों पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक स्थिर रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.58% की बढ़ोतरी दिखाई दी। Key domestic indices gained more than 1% for the second session in a row. Both indices rose amid positive cues from the global share markets.
The BSE Sensex gained 970 points or 1.37% to close at 71,484. The NSE Nifty rose 274 points or 1.29% to end at 21,457. Both benchmark indices hit record time highs in intraday trade. In the broader market at the BSE, the mid-cap index slipped flat and the small-cap index rose 0.58%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 24 companies appreciated while 6 companies declined. HCL Tech galloped 5.6%, TCS surged 5.3% and Infosys by 5.2%. On the other hand, Nestle India fell 1.75%, Bharti Airtel declined 1.3% and Maruti lost 0.65%. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors gained while 4 declined. Information technology chipped in with 4.4%. Tech sector rose 3.64% and metal gained 1.8%. On the other side, realty sector declined 0.76%. FMCG fell 0.32% and services slipped 0.1%. The overall market breadth was positive as shares of 1,969 companies appreciated while those of 1,801 declined. A total of 118 companies remained unchanged. AK sir, unusual for a Friday because normally as folklore goes, Friday closes lower. So what do you think is the cause? Well, there are multiple factors behind this rise, which is a very, very healthy rise for a Friday, as you rightly pointed out. If you want to look at the factors, let me start with the international factors. There is still Indian markets are still buoyed and enthused about what the US Fed has indicated, and at least a minimum of 3 rate cuts to be announced in the course of 2024. So the markets is already sort of discounting that and getting ready for the advantages that will flow in as a result of 3 rate cuts next year. And also the earlier fears that there would be a kind of a sudden impact of the US economy taking kind of a nosedive in terms of production growth falling. I think that those fears are also disappearing. That's the international factor. That domestically, you have to recognize that recent election results have once again provided what is called a continuity premium, that the policy continuity is been ensured. There is market's assessment is that if this is the trend of the election results and the ruling party is showing confidence of staying back in power post 2024 general elections, so the markets are also responding to that mood by staying buoyant. Number 3 factor, again a domestic factor, is about the key numbers in the economy. If you look at the tax collections number, if you look at the economic growth numbers, in every area, even in trade, the deficit numbers have come down. India's logistics costs are coming down rapidly. So you will see that the gains on the economic front are pretty visible and has enthused the market participants, and which is why this increase is quite widespread, except probably in the mid-cap sector where it was flat because mid-cap had already run its course some time back. But if you look at the other sectors, particularly the technology, the financial sector, I think the bull run is on. And my sense is that unless there is a sudden adverse kind of a blue swan event or something like that, this bull run will continue for at least a couple of more weeks. Right. So we also know that, when there is such a good performance by the market, we have profit booking. But on Wednesday, we saw that profit booking happened. The market went down, but recovered. And that by itself is an indicator of strength in the domestic market. Absolutely. I will give you a data point which is striking.
if you look at the journey of the Sensex, a 10,000 point journey of 60,000 to 70,000, it happened in a period of 2 years. But in this 2-year period, it is the domestic investors who have pumped in about 5.23 lakh crore investment, and the foreign investor has pulled out 70,000 crore money. In other words, this 60,000 to 70,000 point run over a period of 2 years have been fueled and pushed by the domestic investors. So the domestic investors are extremely bullish about the state of the market, the state of the economy, and the earnings growth potential. Unless and until the earnings growth potential see some sort of reaching a limit of sorts, I don't see this positive outlook on the market going away and domestic investors coming in, even though the foreign investors are pulling out their money. As I told you, 70,000 crore minus versus a plus of 5.23 lakh crore is a huge equation. I don't think in recent times we have seen that kind of a situation. Right, and the headspace for domestic investors is a lot of way to grow. We'll be back, sir, very soon. But right now, listeners, you stay with us. We take a short break. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। भट्टाचार्य जी, जैसे हम शेयर बाजार की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे और जैसा आपने आंकड़ा भी दिया कि भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने मार्केट में निवेश किया है। अब ऐसे समय में जबकि बाजार 70,000 करोड़ सेंसेक्स 70,000 का अंक पार कर चुका है, ऐसे में आपको क्या लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? अभी थोड़ा इंतज़ार करें कि इस लेवल पर भी उनके पास एंटर करने के लिए कुछ संभावनाएं हैं? पहली बात तो ये है कि जो 70,000 या 31,000 का जो आंकड़ा जो है यही एक सूचक नहीं है। मार्केट में बहुत सारे सूचक हैं। तो अगर न निवेशक जो अगर इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहा हो वो तो अलग बात है, पर वो अगर वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वो किस सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने। जैसे आज ही की रिपोर्ट में आपने बताया हमें कि रियल एस्टेट जो कंपनियां जहाँ वो अच्छी नहीं की आज उन्होंने, उनके एक्चुअली उनके प्राइसेस गिर गए हैं। तो हर सेक्टर की एक अलग अलग कारण है। एक ओवरऑल जो सेंसेक्स जो है वो ज़रूर बढ़ रहा है, पर उसी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो हैं उसको हमें बहुत बारीकी से परख करना है, देखना है। उसके ऊपर अगर कोई सेक्टर्स ऐसे जैसे मिड कैप सेक्टर जो है उसमें बहुत विशेषज्ञों का मानना ये है कि उसमें जितनी चरनी थी ऊपर मार्केट को चढ़ावा था वो काफ़ी हो गया है। तो अगर उसमें आप प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या बने रहना है बने रह सकते हैं। पर ऐसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर में अभी भी काफ़ी एक अपसाइड है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्निकल कंपनीज का सेक्टर्स जो है उनमें अभी भी काफ़ी अभी भी स्कोप आगे का है। और मार्केट को इससे भी एक बहुत बड़ी एक आशा का एक सूचक बन रहा है। वो है कि जब जून के 2024 के जून में जब हमारी इंडियन जो हम इंडेक्स में जेपी मॉर्गन इंडेक्स में अब दाखिल हो जाएंगे इंडिया, तब उससे करीबन $24 बिलियन की एक्स्ट्रा पैसे मार्केट में आएंगे। तो वो मार्केट में जब पैसे आएंगे तब अचानक एक बिग बुल रन होने का एक संभावना कर सकते हैं। उधर क्रूड ऑयल प्राइस जो है उसका जो बढ़ने के जो आसार जो थे
अब देखिए दिसंबर का महीना है, इस समय नॉर्मली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, पर क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो डर जो था बढ़ने का वो भी नहीं है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के बजाय घट रहा है क्योंकि हमारी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम है। तो सारी चीज़ में अगर देखें आप तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर स्टॉक मार्केट स्टॉक पिकिंग हो तो मैं मानता हूं कि ये अभी भी मार्केट ऐसा है अगले 6 महीने तक, जहां तक आप क्योंकि इलेक्शंस भी 2024 में आएंगे, उस समय भी एक बहुत बड़ा एक रैली बन सकता है कि डिपेंड करेगा मार्केट के इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर। तो ये समय ऐसा है कि सेक्टर स्पेसिफिक चयन करके जिस सेक्टर में आपको रहना है उस सेक्टर में रहना चाहिए आपको, और जिस सेक्टर से निकलना है आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी, और चलते हैं रुपए का हाल भी जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 का मूल्य 83 रुपए दर्ज किया गया। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 102.02 पर था। We move on to our next story. Inland fish production in the country during the last 5 years witnessed an annual growth of 7.94% and registered the highest fish production of 131.13 lakh tons in 2022-23. There has been a rapid increase in inland fish production in the country since 2018, from 97.2 lakh tons in 2018 and 19 to 131.13 lakh tons in 2022-23, showing a record increase of 34.9% in the overall inland fish production during the period from 2018 to 19 to 2022-23. AK sir, so earlier you said all the macroeconomic factors are going up, and we also know that, and fish is it's a popular food in many parts of the country. Production is going up, demand is going up, and it is also, I think, in terms of how we see these indicators of purchasing power, that's also going up. Oh, absolutely. I think as a sign of a thriving blue economy, is also remember that the inland fish production also leads and contributes to inclusive economic growth, because largely 94 and 95% of inland fish production is conducted and managed by small families. Right. And number 3 is that it contributes to exports in a big way. There are, and the potential of marine exports of this nature, the fish exports, is huge. This also allows the growth to be a little more equitable. So I think this is a good sign, 35% growth in 4 years. So it's a good, even if you take the average growth of around 8 to 9% growth every year, it's a sign that the blue economy is doing well. Remember that the government had created a separate fisheries ministry, right, in around 2019 or so, and I think you are seeing the results of various initiatives in inland fish production. Mind you, this is not deep sea fishing, this is inland fishing. So which means it is not just for those who take the venture to go out into the deep seas. It is actually within your own country, a small river or a small pond, and there you do your fishing. Environmentally also, it's got a positive contribution. Although I entirely agree with you, the market of it is limited because there are large sections of India where fish is not consumed. But as I said, this has got a huge export potential. Also, if you see a forward linkage, a tertiary linkage, it's also to do with nutrition. Absolutely. And it's really, it's an area we've been looking at. Absolutely. Very true. और चलते हैं रेलवे के अपग्रेडेशन से जुड़ी खबर भी जान लेते हैं। रेलवे परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन अर्थात रेलवे ट्रैक, पुल, लोकोमोटिव, वैगन
और सिग्नलिंग उपकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत मशीनों या उपकरणों को बदलने का फैसला उनकी आयु और वर्तमान स्थिति के आधार पर लिया जाता है। सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे परिसंपत्तियों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। पुरानी हो गई रेलवे संपत्तियों को रद्द कर दिया जाता है और उनकी आयु तथा वर्तमान स्थिति के आधार पर उन्हें नई तकनीक से बदल दिया जाता है। इन पर कुल व्यय 1,22,865 करोड़ रुपए है, जिसमें से 78,501 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता और रेल मंत्रालय के आंतरिक उत्पादन तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से आते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान परिव्यय 29,325 करोड़ रुपए है। भट्टाचार्य जी, आप कुछ इस पे संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे अदा करती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है और अगर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट टाइम में ना होए, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा भी दें, अगर पुराने एसेट को रिप्लेस ना करें तो आपकी जो गुणवत्ता बोलिए प्रोडक्टिविटी में होते हैं उसमें एक दाग पड़ जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अंग है। और जैसे आपने कहा कि अगर 2.5 लाख करोड़ की कैपिटल एसेट एक्सपेंडिचर होती है सालाना रेलवेज में, पर उसके साथ साथ अगर आप रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट देखें वो भी एक बहुत बड़ी चीज है और उससे प्रोडक्टिविटी में तो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट योगदान रहता है। Well, right now it's time for a short break, but we shall be back. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back. You're tuned into Market Mantra. On with the next story, the government's net direct tax collection for April to November 2023 stood at 58.34% of budget estimates at 10.64 lakh crore rupees. In a series of social media posts, the Ministry of Finance said that the net tax collection from April to November stood at 10.64 lakh crore rupees, which is 23.4% higher than the corresponding period last year. The gross collections before issuing refunds grew at 17.7% to 12.67 lakh crore rupees in the April to November period. The refund amount issued from April to November of the current fiscal stood at 2.03 lakh crore rupees. Meanwhile, in the current fiscal, 18.23 lakh crore rupees is expected to be collected in direct taxes and 15.38 lakh crore rupees from indirect taxes. Igisa, in terms of the tax net, and we are wanting to increase it, do you think the pace now is because digitization has come in? I think more the streamlining of accounts, of numbers, of accountability has increased. Our tax net is likely to grow? Oh, absolutely. I think you mentioned the right points. Let me add to them that direct tax collections will tell us that what is the state of the income generation in the country, because direct tax, as you know, is linked to whether the company earning or individual earnings. Now, when direct tax collections grow and at a rate which is much higher than what has been budgeted for, you will remember that the budget had projected a growth rate of around 11%, and today on a gross basis you are looking at a 17% growth, and in the net basis 23% growth. So clearly you are much ahead, and 8 months of the year are gone and you are seeing a higher growth. So it gives you a lot of fiscal cushion to the government. And as you know that there have been some shortfalls in some areas like disinvestment, but the tax collections can come in and meet that gap, and the government can help
meet its 5.9% of fiscal deficit target without much stress. So I think that's a big message from these direct tax collections. And one additional point I would like to say, direct tax collections are more efficient way of collecting tax, because the government does not actually waste much energies in collecting the tax. It is collected at source mostly, and so therefore it's a very efficient way of taxing. So it is also cost effective for the government. Right. In terms of tax to GDP ratio, we are 11% of GDP is the tax to GDP ratio right now, which needs to go up further, but it's work in progress. And I'm sure with greater efficiency, digital coverage, and also the indirect tax GST reforms, it will help mobilize more direct taxes in the months to come. Right. और चलते हैं एशिया के और यूरोप के बाज़ारों का हाल भी जान लेते हैं। एशियाई बाज़ारों में आज मिला जुला रुख रहा। हांगकांग शेयर बाज़ार का हैंग सेंग 2.3% बढ़ा, जबकि जापान के निकेई में 0.9% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की तेज़ी दिखाई दी। दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक वहां बढ़त का रुख था। फ्रांस के कैक में 0.6% और जर्मनी के डेक्स में 0.3% की बढ़त चल रही थी, जबकि लंदन के फुट्सी में 0.6% की गिरावट दिखाई दी थी। A quick look at the U.S. markets. The three major U.S. indices ended positive yesterday. The Dow Jones Industrial Average gained 0.43%, the S&P 500 rose 0.26%, and the Nasdaq Composite Index added 0.19%. Moving on to oil prices. Oil prices rose today in intraday trade. Brent crude was trading at $76.83 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $71.83 per barrel when reports last came in. AK sir, quickly, crude oil and the prices at the way you did mention earlier, it's also like you spoke of a fiscal cushion, so a good oil cushion for us. Oh, absolutely. I think the earlier fears were a little exaggerated, that with the Ukraine-Russia war, and then there was the Israel-Palestine thing. So therefore, I think what is happening in the oil market is a matter of relief for the government. Right. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 75 रुपये महंगा होकर 62,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 105 रुपये की बढ़त से 75,180 रुपये प्रति किलो पर थी। Thank you, sir. Thank you very much for coming on to our program. And now, listeners, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices continue their bull run. Sensex closes at 71,484. Nifty settles at 21,457. Inland fish production registers 131.13 lakh tons in 2022-23. And 1,22,865 crore rupees put in place for railways upgradation. And that's it in this edition. Namaskar. मिलिए गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।